Welcome class 9 students. Let us put our way forward in the chapter Democracy in the Contemporary World with the topic The Changing Map of Democracy. In this topic we will discuss democracy at the global level, how the map of democracy changed with the passing time. So let's start. 20th century was full of kind of stories we have read above. अभी तक हमने दो स्टोरीज पढ़ी, वन वाज ऑफ चिली एंड सेकंड वाज ऑफ पोलैंड, और उसके बाद हमने सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस भी डिस्कस किए थे। 20th सेंचुरी में ऐसी बहुत सी स्टोरीज थी। एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन स्टोरी टू हाउ इट डेवलप्ड डेमोक्रेसी इन इट्स ओन वे, ऑफ चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, ऑफ मिलिट्री कूप्स, ऑफ स्ट्रगल्स ऑफ द पीपल टू ब्रिंग बैक डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी सेटअप करने के लिए, वापस डेमोक्रेसी लेके आने के लिए, या टू डिफेंड मिलिट्री कूप्स एटसेट्रा। Was there a pattern to these stories that record both the march towards democracy and the setbacks of democracy? Let us use the basic features we noted earlier and identify democracies among different countries in the world. चलो अब कुछ पैटर्न देखते हैं in the countries around the world, how democracy developed in every nooks and corner of the world. डेमोक्रेसी विश्व के हर कोने में कैसे पहुंची, वी हैव टू सी दैट थ्रू द स्टडी ऑफ मैप्स. This is what the three maps shown here do. Take a look at these three maps below and find out if there was a pattern in the way democracies have evolved in the 20th century. You have to keenly observe all the maps and you have to find out the distinctions and similarities in the ways democracy developed around the world. The first map depicts the countries that were democratic in 1950, a few years after the end of the Second World War. अब कुछ टाइम लिया गया है फर्स्ट मैप में, वो कंट्रीज दिखाई गई हैं 1950 आफ्टर 5 years ऑफ वर्ल्ड वार 2. सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज फॉट इन फ्रॉम 1941 to 1944 अगेंस्ट जर्मनी व्हेन हिटलर, द कमांडर ऑफ नाजी आर्मी, wanted to rule the whole world. Due to this, Second World War happened. This map also shows countries from this set that had already become democratic by 1900. The second map represents a picture of democratic regimes in 1975 after most of the colonies had gained independence. दूसरा मैप है which shows the condition of 1975, that how many countries were democratic at that time. 1975 टाइम क्यों लिया गया, क्योंकि उस समय तक मैक्सिमम कॉलोनीज़ वे होती है, कॉलोनीज़ इन अ पर्टिकुलर कंट्रीज़ are those areas where a foreign government was ruling or is ruling, जहाँ पर कोई विदेशी गवर्नमेंट कोई अपना राज करती है. जैसे हमारी इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स फ्रॉम 1757 to 1947, 200 years. सो इनको कॉलोनी बोलते हैं. अफ्रीका हैज़ गोट मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलोनीज बिकॉज उसमें Spain, Britain, USA, France, etc. Many of the countries had their colonies set up in Africa. Finally, we take another leap and look at democracies in the year 2000 at the beginning of the 21st century. और एक मैप लिया गया है 21st century का, year 2000. As we look at these maps, let us ask ourselves some questions. How has democracy marched through the 20th century? Democracy की मार्च कैसे हुई? How democracy started to expand itself in the whole world? Is there a clear pattern of expansion? या किसी तौर तरीके से, किसी एक पर्टिकुलर तौर तरीके से पूरे विश्व में फैली, या फिर ऐसे विदाउट एनी पैटर्न? When did the expansion take place? In which regions? इन क्वेश्चंस का हमें आंसर ढूंढने की कोशिश करनी है. So let us take a look at the map 1.1, democratic governments in 1900 and 1950. First, let us take a look at democratic government in 1900 and 1950. जब 1900 में भी डेमोक्रेसी थी और 1950 में भी डेमोक्रेसी थी. तो टेक अ लुक. कनाडा, USA, Brazil, Chile and Argentina, etc. These countries were democratic in 1900 as well as in 1950. और इस तरफ ब्रिटेन, etc. Now democratic government in 1950 but not in 1900.
वो जो 1900 में तो डेमोक्रेसी नहीं थी, बट 1950 में दे वर डेमोक्रेटिक. फॉर एग्जांपल इंडिया गोट इंडिपेंडेंस आफ्टर 1900 in 1947 and declared republic on 1950 when our constitution was adopted on 26 Jan 1950. So take a look at India and Pakistan, both were given independence the same day from Britishers. So India है, Pakistan है, Bangladesh है. At that time it was East and West Pakistan. No Bangladesh was there in 1950. Then we have Myanmar, etc. Egypt है, and many other countries. And means you have to look for all the countries in the map and name them in book itself. ठीक है, उनको एरो लगा के नेम लीजिए कि विच कंट्री वॉज दैट, जितनी भी कंट्रीज में मार्क्ड है. नाउ टेक अ लुक एट द सेकंड मैप 1.2 डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन 1975. 1975 में कौन सी कंट्रीज डेमोक्रेटिक थी? लेट्स टेक अ लुक एट देम. ऑफ कोर्स इंडिया, पाकिस्तान, इजिप्ट, the country in the country in African continent which was democratic in 1950 but not in 1975. So you have to find the reason why it was in democracy in 1950 but how this country lost its democracy in 1975. What happened at that time? Same Canada, USA. Take a look at Brazil also. Brazil, Chile, 1975 में who lost their democracy. Take a look at second map, democratic governments in 2000. See, now most of the countries in the world are democratic. The map is so colorful, means democracy has expanded it to its maximum strength in 2000. If you see our neighbors, Pakistan in 2000 was not democratic because at that time Prime Minister Nawaz Sharif was overtaken by Chief of Armed Forces Pervez Musharraf in a military coup in 2000. ठीक है, you have to find how it happened. आपको देखना उस समय 2000 में पाकिस्तान के ऊपर मिलिट्री coup हुआ था by परवेज मुशर्रफ, who overcame the governance of प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ. ये पाकिस्तान की कंडीशन थी उस टाइम पे. और देखिए चाइना अभी तक डेमोक्रेटिक नहीं है बिकॉज चाइना फॉलोज वन पार्टी सिस्टम. एंड सी most of the countries were democratic by now. Then on the basis of these maps, identify up to 3 countries. In some cases you won't find 3 countries that were democratic in these continents for the given years and make a table as given below. आपने मैप देखा है, आप एक बार दोबारा देखिए. लुक एट दिस क्वेश्चंस, यू हैव टू आंसर देम. ये ग्रुप वाइज करना है, डू इट इन बुक इटसेल्फ. लेट अस समराइज द मेन पॉइंट्स दैट एमर्ज फ्रॉम अ रीडिंग ऑफ दीज मैप्स. आप देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स निकल के आते हैं. व्हाट इज़ द आउटपुट आउट ऑफ दिस मैप्स वी ऑब्जर्व नाउ. You need to go back to the maps to answer the question that comes after each point. Democracy has expanded throughout the 20th century. 20th century में, however, it expanded slowly and gradually, but it expanded throughout 20th century. यानी धीरे धीरे बढ़ी हो. But if you will see the distinction between map 1900, 1950 and 1975 and 2000, you will see that number of countries being declared democratic are increasing. जो numbers हैं democracy के countries के वो बढ़ रहे हैं. Means democracy was expanding in 20th century. It is correct to say that at each point in these maps the number of democratic countries is larger than at the previous point in time. यानी पहले से ज़्यादा ही समय के साथ डेमोक्रेसी कंट्रीज़ की काउंटिंग बढ़ी थी. डेमोक्रेसी डिड नॉट स्प्रेड इवनली इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. कि कोई पैटर्न फॉलो नहीं किया कि फर्स्ट डेमोक्रेसी विल बी डेवलप्ड इन नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, देन यूरोप, देन एशिया, देन अफ्रीका. कोई ऐसा पैटर्न फॉलो नहीं किया है कि डेमोक्रेसी पहले इस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट में आएगी या पहले इन पर्टिकुलर ही कंट्रीज़ में आएंगी. इवन अनइवनली, यानी विदाउट एनी पैटर्न इट फॉलोड इट्स वे थ्रू आउट द वर्ल्ड. It was established first in some regions and then spread to other regions. Which continent? और ना ही ऐसा हुआ कि भाई अब इंडिया में डेमोक्रेसी आ गई तो लेट्स ब्रिंग इट इनटू चाइना, चाइना में आ गई तो रशिया, रशिया से, यानी नो नेबरिंग, यानी कुछ भी पैटर्न नहीं था जैसे डेमोक्रेसी डेवलप हुई. While a majority of countries are democratic today, there are still large part of the world that are not democratic.
अब most of the countries in the world are democratic, so we can say most of the countries in the world have a democratic government in their governance system. मगर अभी भी कुछ कंट्रीज है जैसे चाइना है जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है. तो यू नीड टू फाइंड एटलीस्ट 5 countries which don't have democracy till now. For example, China, North Korea, etc. Now a bit of 1.3 phases in the expansion of democracy. Phases, what were the different phases through which the expansion of democracy passed to achieve this feat to declare the world as a democratic world. यानी एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी में डिफरेंट फेजेस क्या है. जब डेमोक्रेसी फैल रही थी तो क्या क्या डिफरेंट फेजेस है जिसके कारण जिसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं. फर्स्ट द बिगनिंग, हाउ इट स्टार्टेड. दीज मैप्स डू नॉट टेल अस मच अबाउट व्हाट हैपेंड बिफोर द 20th century. ये 20th century के पहले की कोई स्टोरी नहीं बताती बिकॉज वी हैव रेड द स्टोरी द मैप्स फ्रॉम 1900 to 2000, only 1 century. The story of modern democracy began at least 2 centuries ago. You may have read the chapter of French Revolution of 1789 in the history book of this course. आप 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ेंगे 10th क्लास में एंड यू विल नो कि हाउ द सीड ऑफ डेमोक्रेसी वॉज शोन इन द वर्ल्ड. This popular uprising did not establish a secure and stable democracy in France. However, yes, it was such a huge level of protest, मगर फिर भी स्टेबल डेमोक्रेसी फ्रांस में नहीं डेवलप कर पाया था. यू विल लुक एट द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन ब्रीफ in your class 10th history book. Throughout the 19th century, democracy in France was overthrown and restored several times. कभी नेपोलियन बोनापार्ट आए, कभी कोई और लीडर आया who overthrown the democracy at different times. Yet the French Revolution inspired many struggles for democracy all over Europe. फिर भी फ्रांस एक ऐसी कंट्री थी which motivated all the countries around the world to bring back democracy in their country itself. फ्रांस से बाकी कंट्रीज़ को एटलीस्ट मोटिवेट किया कि they can also have democracy in the world, which is considered as one of the best way of governance in the system. In Britain, the progress towards democracy started much before the French Revolution. Britain, which overruled many of the countries in the world, उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले ही डेमोक्रेसी की कहानी शुरू हो गई थी. But the progress was very slow. Through the 18th century and the 19th century, series of political events reduced the power of monarchy and feudal lords. The right to vote was granted to more and more people. धीरे धीरे right to vote came into consideration कि सभी लोगों को वोट देकर अपना राजा सेलेक्ट करने का हक होना चाहिए. राइट टू वोट में डिफरेंट फेजेस थे. पहले ये सिर्फ मैन को मिला हुआ वर्किंग एज, फिर धीरे धीरे एज छोटी होती गई 18 ईयर्स. उस टाइम वुमेन को इतना हक नहीं था, फिर धीरे धीरे वुमेन को मिला. देन इट वाज डिक्लेयर्ड यूनिवर्सल सफरेज मूवमेंट, जिसमें above 18 years all men and women were given the right to vote in many of the countries, and it is one of the most important feature of democracy, right to vote. Around the same time as the French Revolution, the British colonies in North America declared themselves independent in 1776. In the next few years, these colonies came together to form the USA. ऐसे ही Britishers were ruling North America, today's United States of America. In 1776, they also revolted against British government and gained their independence from British colonies and declared themselves as the United States of America, which is one of the world power today. With this, I sign out and let's continue tomorrow.